Morning students. So today we will discuss a new poem number 2, Fire and Ice. First of all, we will discuss about introduction of this poem. So Robert Frost's poem Fire and Ice expresses the profound idea that the world would end in either of two ways. कि कभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि संसार का अंत कवि के अनुसार दो तरीके से हो सकता है, either by ice or fire, या तो बर्फ के द्वारा या अग्नि के द्वारा. Both the components are compared with self-destructing human emotions, hatred and desire. ये दोनों वस्तुएं आइस और जो फायर हैं वो दो ह्यूमन इमोशंस नफरत और इच्छा के द्वारा कंपेयर किए गए हैं. द पोएम वेरी आर्टिस्टिकली अंडरपिन्स द philosophy that we let our emotions rule us, and if we don't control them they will surely destroy everything around us. यानी मनुष्य बताता है कभी यहाँ पर कि हम अपनी दो भावनाओं पर अगर कभी नियंत्रण नहीं रखते, नफरत और इच्छाओं पर, तो वे दोनों ही हमारे आसपास की सभी वस्तुओं को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं. Similarly, he thinks fire and ice both are just as competent in bringing the world to a catastrophic end. और ठीक उसी प्रकार से वो कहता है कि फायर और आइस दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटेंट हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतिभागी हैं इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू ए कैटास्ट्रोफिक एंड, जिससे कि इस संसार का पूरी तरह से विनाशकारी अंत हो सकता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थीम ऑफ दिस पोएम. इन द पोएम फायर एंड आइस द पोएट इज सरमाइजिंग द fate of the world. What caused it to end? Being a poet, he likes the causes to the imperfections in human nature and not just plain physics. He dwells on two causes that are believed to end the world, fire and ice. Here, fire is symbolic of human desire or passion, and ice is symbolic of hatred. Humans have raided the planet in an attempt to satisfy their desires. We cut trees, pollute the air, water and land just to get and experience the things we want. We do this without any consideration of what effect it will have on nature. Here, fire also symbolizes passion or, so to say, sexual desire. This desire, although responsible for continuation of life, if not controlled, can also lead to misery and self-destruction. Now we will discuss about the summary of this poem. In this poem, the poet talks about two different beliefs. इस कविता में कवि दो अलग अलग बिलीफ्स के बारे में बात करता है रिगार्डिंग द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के अंत को लेकर. He says that he is in the favor of those who says this world will end in fire. कवि कहता है कि वह उन लोगों के पक्ष में है जो कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि के द्वारा होगा, as he has seen the effect and result of uncontrolled and unending desires, क्योंकि वह कभी ना समाप्त होने वाली और अनियंत्रित भावनाओं के परिणाम को पूरी तरह से देख चुका है, उनके प्रभाव को देख चुका है. इसलिए वो कहता है कि संसार का अंत केवल अग्नि के द्वारा होगा. He finds the human desires same as fire in its nature. वह मानव इच्छाओं को बिल्कुल ऐसे तोलता है या ऐसे आंकता है जैसे कि प्रकृति में. ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, द सेकंड बिलीफ, दूसरा जो मत है, टेल्स दैट, वो हमें ये बताता है दैट आइस इज सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रॉइंग दिस वर्ल्ड, कि बर्फ जो है वो इस संसार के अंत के लिए पर्याप्त है. एंड द पोएट कंपेयर्स द नेचर ऑफ आइस विद हैट्रेड, और बर्फ की प्रकृति को कभी नफरत के साथ उसकी तुलना करता है. एज आइस कैन मेक ए पार्ट ऑफ बॉडी नम, जिस तरह से बर्फ है शरीर के किसी भी हिस्से को सुन्न कर सकती है. विद इट्स प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट लाइक हैट्रेड, ठीक नफरत की तरह. इट कैन ऑल्सो गिव नम्बनेस टू आवर माइंड, ठीक उसी तरह नफरत भी हमारे मस्तिष्क को पूरी तरह से सुन्न कर सकती है. एंड थॉट्स, और हमारे विचारों को एकदम शांत कर सकती है. एंड मेक अस इनसेंसिटिव एंड क्रूअल, और हमें लोगों के प्रति असंवेदनशील और निर्दयी बना सकती है. द पोएट ब्रिंग्स अस इनटू द मिडल ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, और कभी हमें एक आर्ग्यूमेंट के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देता है. बिटवीन पीपल, उन लोगों के बीच, हु थिंक द वर्ल्ड विल कम टू ए फायरी, जो लोग सोचते हैं कि संसार का अंत अग्नि के द्वारा होगा, और पीपल हु थिंक द वर्ल्ड विल फ्रीज, या फिर वे लोग सोचते हैं कि ये संसार पूरी तरह से जम जाएगा. He could be taking about the literal end of the world, और
वह इस संसार के जो अंत को लेकर बात कर रहा है, बट ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द पावर, लेकिन वह इस संसार की जो शक्ति है, दैट ह्यूमन बीइंग हैव टू हार्म और डिस्ट्रॉय वन अनदर, जिसमें मनुष्य एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं या नष्ट कर देते हैं, उसके बारे में, उन ताकतों के बारे में वह बात कर रहा है। The poet's experience with romantic desire had taught him that passionate or hot emotions like love and lust probably have the power to turn the earth into a big fireball. कवि के अनुभव के अनुसार जो रोमांटिक डिजायर्स होती हैं वो भी उसे सिखाती हैं कि पैशनेट या हॉट इमोशंस होते हैं, जैसे कि प्रेम, लस्ट, ये सभी निश्चित रूप से इस पूरे संसार को, ये पृथ्वी को एक बड़े सी फायरवॉल में टर्न कर सकता है, तब्दील कर सकता है। बट ही हैज ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड द अदर एक्सट्रीम एंड ही नोज दैट कोल्डर इमोशंस लाइक हेट, कि जो ठंडी भावनाएं होती जैसे कि एक दूसरे से नफरत करना, हैव ग्रेट डिस्ट्रक्टिव पावर, उनमें भी बहुत विनाशकारी शक्ति होती है। लव गेट्स ऑल द पब्लिसिटी, प्रेम सभी तरह की पब्लिसिटी पा सकता है, बट हेट इज द साइलेंट किलर, लेकिन नफरत एक साइलेंट किलर का काम करता है। इट मे नॉट हैव द सेम ग्रैंडर एज द फायरवॉल एंडिंग, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं होती जिस तरह से एक फायरवॉल के अंदर होती है, बट इट विल डू द ट्रिक, लेकिन ये जो तकनीक है जरूर एक ना एक दिन किसी को नष्ट करने के काम आती है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। सो नाउ लेट्स रीड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। Some say the world will end in fire, some say in ice. Here, the end of the world could mean doom or apocalypse as stated in religious texts like Bible. It could be a celestial happening as stated by the astronomer mentioned earlier. It could also be a natural calamity happening on earth itself like volcanoes or forest fires or the ice age. It could also mean man-made destruction of the world because of man's greed or animosity, leading to global warming or nuclear war. It also points to the collapsing of the world around a person because of his mistakes on two similar regions. The poet has demarcated the reason of his destruction into two major schools of thought, one in favor of fire and the other in favor of ice. Now see the second stanza of this poem. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice. So here in these lines the poet knows that what it means to have desires from his knowledge and experience of this feeling, and the havoc it can cause to a person it done in excess. He agrees that desire can be a cause of destruction, कि जो इच्छाएं होती हैं वो किसी के विनाश का कारण हो सकती हैं। Fire is used in reference to the animal tendencies in us, और fire को यहाँ एनिमल टेंडेंसी के रेफरेंस में यूज किया गया है कि सभी प्रकार के मनुष्यों में पाश्विक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। All these emotions are associated with hotness, ये सभी इमोशंस हॉटनेस से एसोसिएट रहते हैं। Here desire could mean ambitions, aspirations, greed, lust, etc. We commit mistakes also to say sins is running after our desires. We do not see that it can harm other people, animal, plants or nature. If we blindly go after it, excessive emphasis on desire is what keeps us from experiencing pure joy and bliss. Now see the third stanza of this poem. I think I know enough of it to say that for destruction ice it is also great. So here the poet has also experienced negative feelings like hatred himself, also in people around him. He is owing up to have this feeling himself. So we can also say that he is being very honest with us. Hatred is taken to an ice cold emotion. It could also be that he has received this emotion from someone and knows what wrong it can do when you become selfish and think only about yourself. You don't care about anybody else. Let's understand why he has associated hatred with ice, and also why destruction by ice is following destruction by fire. You have a fit of rage, which is hot feeling, then it keeps smoldering inside you, and finally you become impervious or to love. You become indifferent,
uncaring, and devoid of positive feelings. Thus, hatred destroys the very humanity in you. If love is lost, everything is lost. This is a great recipe for an impending disaster. Now, the last line and would suffice. This line lingers in mind and makes your hair stand on their ends. It frightens you and make you shudder to think that very inadequacies and imperfections in human nature could boomerang on us and lead to our destruction. So this poem make us think deeper about our negativity. It, it propels us toward the introspection. What we can learn from it is that we should strive to keep human values alive. We should keep our desires and hatred in check. Desires can be controlled by being satisfied and happy with one has love for all living beings, and nature can be an antidote for the venom of hatred. So this is the complete explanation of this poem Fire and Ice, which has been written by Robert Frost. If you find any kind of difficulty, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.